So friends, good morning everybody. Good morning everybody. Good morning. जोर से आवाज आने दीजिए सबका. So friends, ladies and gentlemen, a warm welcome to all of you for this prestigious SME Manufacturers and Exporters Summit, which is mainly focusing on empowerment of SME sector, providing opportunity for networking, connectivity, exploring opportunities for supply, procurement, channel finance, investment, identify new technologies, joint venture collaborations and contract manufacturing, as well as to explore the emerging markets for the export and international markets. As we embark on this journey of insights and discoveries, I extend my heartfelt gratitude to all the distinguished speakers and participants who have gathered here in Pune. I would like to also express my thanks to our sponsor partners, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Salesforce, JSW Steel, MCX, SME Industrial Parks of India, Government of Maharashtra, for sponsoring this event to make this event a grand success and provide opportunity to you all to understand the various opportunities and various support services available by these sponsors and stakeholders. Over the 3 decades of journey, SME Chamber of India, with its mission to protect the interests of SMEs, has been driving force in the creating conducive environment for their growth and to support the SMEs to connect, communicate, commercialize their business ideas and expansion of various business activities under the dynamic leadership of Mr. Chandrakant Salunke. MEDA is another leading association headed by Mr. Salunke, which is basically leading advocacy and lobbying organization for the state. It acts as a think tank to provide the important and value-added inputs and suggestions to the state and central governments, corporates, MNCs, banks, financial institutions, regulatory authorities, and government agencies to provide the level playing field and secure the interests of the manufacturing industries in ease of doing business for the inclusive and sustainable growth of the state. The chamber has been in the forefront to encourage SMEs and manufacturing industries to avail various incentives and advantages of the several schemes and policies of the state and central government departments, resolving many issues and grievances related to the manufacturing industries and other business. Friends, Chamber has been putting a lot of efforts for the business growth in the SME sector and exploring emerging business opportunities at the national and international markets. Export promotion in various countries, identifying the potential foreign partners for joint venture, technology transfers, contract manufacturing, and international collaborations. Supporting for marketing, promotion of branding of your products and services, finding distributors and franchisee partners, and most importantly, supporting SMEs for channelizing banking finance and investment for their business growth and expansion and diversifications. So, Mr. Salunke, Chandrakant Salunke, he is guides and mentors for the manufacturers, exporters, women entrepreneurs, and family-owned business head for awareness through the awareness programs on scheme, policies, benefits, and incentives. He is actively supporting branding of Indian SME products, facilities, and establishment of manufacturing units in India and abroad, organizing business promotion programs. His leadership has led to the organization of high-profile national and international trade activities, events, conferences, seminars, and webinars, fostering knowledge enhancement, skill development, and revival of restructuring struggling SMEs. Notably, Mr. Salunke is instrumental for the policy framework changes and its implementation and adding resilience to the regulatory framework for redressal of various issues and grievances. He has advocated for setting up the SME stock exchange, trade platforms to get the trade receivables on time
collateral-free loans up to 5 crores under the CGT SME schemes. And he has insisted, then the Prime Minister, late Sri Atal Bihari Vajpayee ji, to change the definition of small-scale industries to micro, small and medium enterprises, that is MSME recognition, and has pursued with the current Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, to enhance the turnover limit of MSME sector to corporate and complete with the global SMEs, to compete with the global SMEs, as well as to create positive approach from the stakeholders toward the SME sectors. Our agenda of the day is thoughtfully designed to devolve into critical areas of growth for the manufacturing and SME sector. We are going to have the insightful session on SME growth and innovation. Today we are honored to have a distinguished line of speakers who will share their expertise on various crucial for the development and advancement of small and medium enterprises. To start the event, I would like to invite speakers on the dais. First, I would like to invite Mr. Chandrakant Salunkhe to come on the dais. Mr. Durvashish Bhattacharya, Head MSME and Co-Lending, Bank of Baroda. Mr. S. Balaji, AGM, Punjab National Bank. And Mr. Milind Padole, Managing Director, Adorable Robotics and Automation Limited. I request all of you to give the big hands to our speakers. Now I'll request Mr. Chandrakant Salunkhe to proceed for the session with his welcome and introductory address. Over to you, sir. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. क्या बात है, पुणे वालों के पास आवाज़ नहीं है क्या कि बिजनेस पे बर्डन में बैठे हैं. गुड मॉर्निंग. मैं ऑलवेज कहता हूँ कि हमारी आवाज़ मोदी साहब तक पहुँचनी चाहिए. नहीं तो एसएमई की आवाज़ मोदी साहब तक नहीं पहुँचेगी तो हमारी प्रगति कैसी होगी और विकसित भारत कैसा होगा. On behalf of SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association, it's my immense pleasure to welcome you at this very important series of the events we are organizing, especially for SME manufacturers and exporters, particularly for exploring the emerging market in India and outside of India. Let me give special thanks to Mr. Bhattacharya, then Mr. Balaji and Mr. Padole to grace this occasion, because everybody is busy in this coming March. And before March, this is the last 2 days of the month of the leap year. And I'm sure that everybody, and even businessmen also are busy because, to achieve the target. But nevertheless, interacting with the bankers is always best because they will be fueling your fueling the finance for your particular growth. Friends, SME manufacturers and exporters are backbone of Indian economy now, because government of India is looking to achieve the $5 trillion economy, making India as a manufacturing hub, achieving the target for the exports. So the SMEs are playing very important role. I'm sure the PNB and Bank of Baroda is forefront for providing the value addition services, banking, finance services, especially the SME sector. Those are looking for expand their business activity. We have been, particularly interacting with a lot of bankers, particularly with the MD and CEOs. Recently, I met Mr. Atul Goyal. He's a very old friend of mine. And he said, we want to enter into all SME segment where we can have a proper connectivity with them to provide our finance and support services. Recently, you must be seen, they have published one news advertisement in a newspaper about export finance. Similarly, Bank of Baroda is equally working for the SME perspective, SME empowerment. Maybe Dhruji must be aware that when Mr. Anil Khandelwalji was a chairman of the Bank of Baroda, that time I met him and he said, what is the meaning of the SME factory? What SMEs are doing?
Are they into factory or they are just service sector? So all of you must be aware that earlier only the manufacturing SMEs are manufacturing industry. Nowadays expanding into service sector. And that time we had discussed about particular project, particular subject on SME factory, and they have brought this is the first bank in India. They have brought SME factory, focused SME factory platform. So the point is, banks are having abundant money. Only thing is there is a big gap. The big gap to understand how to avail that, how to take advantage of the services, how to take the advantage of the financial availability with them. Only this is the point where we have to focus. Because I think 6.33 crore MSMEs are there. Hardly 50 lakh also not be enjoying the banking facility. They must be having the bank account. जैसे जनधन अकाउंट जैसे ओपन हो गए वैसे बैंक अकाउंट भी हमारे हैं, लेकिन कितने एसएमईज उसका फ़ायदा लेते हैं ये बहुत जानना जरूरी है. तो मैं आप दोनों बैंकर से कहूँगा, यू आर अ सीजन बैंकर. सी यूजुअली क्या होता है, हम ब्रांच मैनेजर के पास जाके बैठते हैं ना, तो पहले कहता है कितना कोलैटरल है. आपको शायद सबको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, कितना कोलैटरल देते हो. अब वो नहीं जानता है कि ये सामने बैठा हुआ बंदा आज स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, ये कल का इमर्जिंग कॉर्पोरेट भी हो सकता है, इमर्जिंग इंटरप्राइज भी हो सकता है. आपके पीएनबी के चेयरमैन थे केसी चक्रवर्ती जी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आए हुए. तो उनके पास जब मैं गया था, व्हेन ही वाज अ चेयरमैन ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने कहा था कि मैं हर बैंकर को, हर मेरे स्टाफ को कहता हूँ, आपके सामने जो भी एंटरप्रेन्योर आता है, वो छोटा हो बड़ा हो, आप ऐसा सोचना है कि ये मेरी आने वाले फ्यूचर का बड़ा बिजनेसमैन है. तो उसको पहले से अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर आप पहले से उसके अगर रिक्वायरमेंट जानोगे, तो मुझे लगता है आप उसके प्रगति में, उसके ग्रोथ में यू विल बी वन ऑफ द पार्टनर. बट समहाउ मेरा एक्सपीरियंस ये है कि समहाउ बैंकर्स आर नॉट फोकसिंग particularly to provide the funding to MSME sector. आज आप सीनियर लेवल पर है, आप तो चाहते हो कि बैंक की प्रगति हो, बैंक का जो प्रोडक्ट है प्रमोट हो, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो भाषा का जो प्रयोग होता है वो थोड़ा सा चेंज होना, वो अप्रोच चेंज होना बहुत जरूरी है. Yesterday, government of Maharashtra has announced that around 18 small entrepreneurs के लिए ready-made industrial premises to be established. And recently I had a discussion with Mr. Atul Goyal, who is a chairman of PNB as well as IBA की भी है. तो उनको मैंने कहा कि हमारे एसएमई एंटरप्रेन्योर्स क्यों खुद की इंडस्ट्री नहीं लगाते, क्यों खुद के इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस नहीं बनाते, क्यों ना वो बाय करते, बिकॉज they have to spend 30 to 40% margin amount to buy that premises or land. तो उनसे मेरी ऐसी बात हुई कि 90% लोन से ज़्यादा 95% तक अगर इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस परचेस करनी हो तो आपको देना चाहिए. मंजूर है आपको? क्योंकि हमारा मार्जिन अमाउंट कम जाएगा तो वर्किंग कैपिटल में हम यूज़ कर सकते हैं, उस मार्जिन अमाउंट से हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. तो ये जो दरार जो है कम होनी चाहिए. तो ध्रुव जी, आप जीएम हो और आप भी इस रीजन के हो, तो मेरी राय है कि आप फोकस कीजिए कि 90%, मैं ऐसा नहीं कहता कि जिसका प्रपोजल वाइबल नहीं उसको भी दीजिए. आप जैसे वेल्दी एंड हेल्दी कंपनी है तो उसको आप देने में दिक्कत नहीं है, उसको भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारा गैप पैदा हो जाता है, तो वो कम करने के हिसाब से बैंकर शुड कम अहेड. और आज स्पेशली बैंकर्स को मैंने कोई मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को नहीं बोला, स्पेशली बैंकर्स को बुलाया क्योंकि दे आर पार्टनर ऑफ योर ग्रोथ. और बैंकर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वैल्यू एडिशन सर्विसेज प्रोवाइडर है, ट्रेड फाइनेंस है. आज हमारी अनिया यादव जी यहाँ पर बैठी है, शी इज ईगर टू सपोर्ट यू फॉर पर्टिकुलरली टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ट्रेड फाइनेंस के लिए बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ट्रेड फाइनेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. और मुख्य बात यह है, प्रमुख बात यह है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोसेसिंग, उसका कंप्लायंसेस एंड फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए बहुत दिक्कत आती है. तो फ्रेंड्स, आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज ऑल स्पीकर्स आर हैविंग tremendous plans and ideas, particularly to present all of you. But nevertheless, SME Chamber of India will be happy to support you, will be happy to guide you
We'll be happy to assist you to grow your business, not only in domestic market but international market. I know some of there are, the manufacturers are sitting here. If they are looking for ready-made industrial premises, ready-made industrial units, there also my team is, we have started SME Industrial Parks of India. Through that, we can provide you. And, we are going to collaborate with the banks. SBI already we have done, PNB we have started. And most of the, the private bankers, like Yes Bank, Kotak Bank, ICICI Bank, SDFC Bank, they are coming ahead with the concept that 90% loan to be provided to buy the industrial premises. So friends, let us take advantage of this facility because we have to achieve the target growth set by the Prime Minister. Manufacturing hub को हमें बढ़ाना है तो SME sector को empower करना जरूरी है. और SME sector को empower करना है तो bankers को आगे आना है. Bankers को आगे आना है with the positive mindset that I want to support the industry, I want to support the SMEs to grow more. So with this word, I'm thankful to all of you, especially all the speakers and all the sponsors and supporters. And special thanks to Mr. Panwaleji for taking time to busy schedule to share your thoughts. Thank you very much. All the best for today's event. Thank you. Thank you, Mr. Salunke, and big round of applause to Mr. Salunke for taking the issues and grievances of the MSME sector to this respective authorities and get it done from them, whatever SME is required basically. So now I will invite Mr. Milind Padole, Managing Director, Affordable Robotics and Automation Limited, and he is going to talk on innovation and invention strategies for commercialization. Over to you, sir. Hi guys, good morning. So I'm going to quickly introduce about my company and then, I'm going to talk about journey of entrepreneurs and what we should do and what not. Probably I might offend a lot of bankers because my opinions are very different like all other entrepreneurs. So no offense, okay? It's an open discussion, right? So I'll quickly discuss about my company. It's AREPL, Affordable Robotic and Automation Limited. We started this in 2005. So after I did my engineering, I went to Germany, was there for a couple of years, and when I came back, I started in 2005 robotics. So people used to call, robot cannot work in India because the labor is so cheap. But then I had conviction that, robotic is inevitable, especially in automotive industry, right? So with growing economy, every car is different, there are multi-models, and manual welding is just not possible. So that is how we started in 2005. 2018, we got listed on SME exchange. Now, this month, we are going to migrate to main board. Our market cap is, so okay, this is, can I use pointer somewhere? You can use there. It works anywhere else. Pointer. This one? Okay. So, okay. AREPL is the first robotic company to get listed on BSE. 18 years since we started. We are on a growth trajectory after we got listed, after we got funds, and we are at a 40% CAGR year to year. We have installed almost 5,000 robots till now and 10,000 automated parking. We are present in 3 segments. So we started with welding robotics. We are into automated parking, which goes till 70 meters and completely automated parking. The third is warehouse automation, where we have our own robots and we focus in US market. And third is, okay, so these are our in-house capabilities. So these are some of the customers. So these are basically 3 verticals we deal in. Unfortunately, there are no videos attached because I'm not using my computer.
But then these are some of the electric autonomous bots which we have developed for US market, and we have started, this is the first year of revenue in US. So this is all about us, and the topic which I'm going to cover is innovation and invention strategies for commercialization. So what we are going to discuss is how to identify a product, okay, if you want to divert or if you want to add certain products, how to identify a product. Investor requirement, if you know how you can raise funds. So that's the main pain point for all entrepreneurs, right? And various ways to raise funds, and then we can have a Q&A session. So how to identify a product if we have to start, right? If we have to do some innovation or invention. So how to identify a product? So so I will always be talking about, you know, from the point of view from investors, like who is going to pay you money, right, to do all this stuff. So one is you should always look for sunrise industry. You should never look for a, you know, which is established industry or established products. So what is sunrise industry? Sunrise industry is like, you know, for example now can be electric cars, electric powertrain, you know, there is a lot of things there. Solar, or, you know, lot of things which are like, can be sunrise industries, right, where investor will be interested to put money. Second way of looking at the problem is you can always see the import bill of any country, right? So, and you can start thinking what products can fit into that. So if you see India's import bill, so the largest bill India pays is for the oil, right? Second is for the gold, third is for electronics, and fourth is capital goods, right? So when we see oil is the biggest import India does. So what can be the alternative for oil, right? So electric cars, everything electric, right? So that is the way, like if you're doing anything into that, be it motor, be it controller, be it the complete powertrain or whatever, you need to understand how electric things work, right? So any product in that which will reduce the import bill of, for example, India, if you're in India. If you're in US, go and see US ka import bill and, you know, design product for US market. So gold, I don't know, gold bonds probably. The third is electronic, right? So if you're into electronics, embedded is coming in big way, right? A lot of foreign players are coming into embedded. We have a lot of electronic and embedded engineers. So there are a lot of products in electronics itself, right? You go to a gym, the treadmill, the controller is imported. Why can't any guys make the whole controller of a sada gym? Everybody goes to gym, but nobody makes the controller, right? So we can make that panel. We can, you know, it's not a rocket science. You take their help, go to anywhere and get a tie-up if you cannot develop. But these are the kind of products which you have to look, right? So electronic is the third largest bill of India, and you need to identify products and do invention and innovation in that, right? Fourth is capital goods. Capital goods is endless. There is an infrastructure boom in India. You see all the cranes are imported. You go to a tire shop, the tire repairing machine, the alignment machine is imported. All capital goods are imported. You can look at, you know, when you see the import bill, you have to see the amount also, like how big is the problem, right? So I'm coming to that next. So the third way of, you know, looking what to innovate and how to innovate is go abroad and, you know, go to China and you will see what are the trends. Go to US and you will see what are the trends in your own field. So I think so we'll come back to this slide again if we have doubt. So, okay, so once you have identified a product, once you have realized what you have to do, right? So then what investors look into is what is the product, the team,
who is behind this, right? What are their domain experts? So if you don't have team, get those kind of domain experts in your team, right? Don't keep fighting alone. You will reach nowhere, right? So get, if it is like an electronics thing, or if it is like a controls, if it is a capital, search for domain experts, like-minded domain expert. You will have a lot of friends across, somebody will be electronic engineer, somebody will be IT engineer. Get those domain experts on board. So once you identify a product, what problem are you solving, right? You're reducing oil bill, you're reducing whatever. So what problem? So investor will clearly like to understand what problem you're solving and what is the size of problem. In India, all over the world, when the size of the problem is like whether it is $10 billion market or 40 billion, or what is the size of the market. So when you see any product, when you identify a product, you have to also see how big is the market. And there are n number of surveys, right? Survey reports freely available, so you can just go and see how big is that problem or how big is the market size. And then, of course, scalability, like, how fast you can scale. And then is the revenue model, then is go-to-market strategy, how you're going to, do, whether it is B2B, whether it is B2C, and how you're going to, so GTM, it is called GTM strategy. Revenue for next 3 to 5 years, fundraise and fund usage. So if you can write answers to all these points, and if you're satisfied yourself, this is called the deck, right? Pitch deck. So you have to write all the answers for this, and then there'll be, investors would like to see all that. Once you find a product, then you have to start writing all this about that. These are the basic things, but see, I am a Maharashtrian, right? So I come from very humble beginning. Without any zero capital, like we are at 100 million market cap today, right? So the journey is not so easy, right? I understand, I can totally understand with all the entrepreneurs here. So we don't know the basic step. We don't know how to look a problem. We don't know what are the next step to raise funds, right? And this is probably the most interesting, and probably banks won't like me talking about this, but then this is what it is. So as an entrepreneur, we don't know how to raise funds most of the time. And we go to the bank, and you know what happens, right? So they will say whether you have collateral. So first we have to earn, buy a property, then mortgage, then raise fund. So we are like, sometimes I don't understand. On one side, we have to compete with Chinese who get at 2%, and we get at 12%, plus the mortgage property, and I don't know what is the maths. So till a point, bank can support you, right? So when you see the expense, it is like asset, we have to buy asset, then there is a working capital, and then there is a growth fund. Bank doesn't understand growth fund. They will never ever even talk about growth fund. They think, okay, day one, you reach your capacity, you should be profitable. We are giving you moratorium for 6 months, that's all. And magic happens. So it doesn't happen like that, right? In industry, it doesn't happen like that. You and me, everyone knows. There is a gestation period, probably 2 years, 3 years, 5 years, where we burn. Nobody talks about that. Nobody funds that, right? And we are struggling day in and out to come out of that rut. So that's the fact, right? Whatever schemes, whatever. So any which ways. So first few steps, probably, bank is going to fund for till a limit, right? But you are not here to do business, buy property, mortgage. You can't keep on doing that. At a level, you have to compete with Chinese. Chinese grow from 0 to 1,000 crores in 10 years. You are not even growing from 0 to 100 crores in 15 years. So how you're going to compete with Chinese, right? At the end, it is cost game.
So you have to scale up at a faster pace. And for the faster pace, you can't just keep on buying property to mortgage to bank, right? So you have to have growth funds also, which will accelerate the whole growth itself, right? So these are the three ways of raising funds. Most of entrepreneurs don't know, and that is the reason why SME has, got me here to talk about how to raise funds for the small, entrepreneurs. So when you start like this. You go to a CA, make a balance sheet, go to bank, and then, you raise funds. But that is like a slow cooking. You have to cook for the whole night to get a food next morning, right? So it works for some time. Then at a point, it doesn't work. If you have to grow, just, taking funds on balance sheet and those maths, because banks are conservative, they have their own, guidelines, so they can't go beyond that, right? So the next option is, which is very loosely say people use venture capitalists, private equity, and stuff like that, right? So most of us don't even know whether what kind of fund who gives, right? So bank will always give you debt funding. They will never give you growth funding. Okay, so you have to understand in your own mind what is, why you want money, whether to buy a machine, whether to buy a working capital, or whether it is like a, you have to hire 10 people. They will probably start working after a year, and that is a growth funding which you are going to burn. So that bank is not going to give, and that you take out from the CC, and then you're gone. You are in that tight, always cycle. So, sorry. So a bank will always give you debt funding. You require a CA that everyone knows, and it is primary funding. They will only give to put in the business. They won't give you कि बाबा 5% के बदले में ये लो और तू ये 5% घर पे लेके जा. There is no secondary funding. Bank is not going to give that, right? So bank is not for that. Of course, not for that. Next is, when the idea is small, when you are small, like you are 20 crores, 30 crores or whatever, right? And then you want to jump to 150 crores. You have got a product which can scale to 150. Bank is not going to give you that kind of support, right? So if it's an idea stage, you can go to family offices. You require an investment banker for that, okay? CA doesn't work there. His jurisdiction gets over. So you have to search for an investment banker who will take you to family offices. So family offices will typically put 5 crores, 10 crores in any idea stage, or, probably very minimal revenue. So seed or pre-series A you can call. What is seed? Seed is just an idea. What is pre-series A is probably the product is ready, but you have not yet sold. So revenue is not yet established, but you have made the product. So first is seed, then is pre-series A. Pre-series A is very loosely terms, but it is a pre-revenue. And series A is then you have made initial revenues, and then, So you have to always go to family offices. Don't go to private equity directly. They will reject you. They will call you for meeting. They listen to your ideas. They will say, "Acha, abhi to bahut chota hai tum, revenue karo fir aao." So don't waste your time. They will never fund you, right? So go to family offices, small family offices or big family offices. They will give you 5 crores, 10 crores, right? At idea stage, at product stage. Then is venture capitalist. So venture capitalists will give you, pre-series A probably. So these are 50 crores, 20 crores, 30 crores, 50 crores, check, they can write. Then once you are at good revenue, go to private equities, okay? So typically, funds period is 5 to 7 years here. So there is always a fund time, like, you have to give them whatever returns. So 5 to 7 is the
typical fund, if you're lucky and entered in the initial time, so you will get 7 years time. So they will always give you growth funding. They will not say, okay, this is working capital or this is asset. So they always want asset light, but they will, it is exactly opposite to banks. So they will always say asset light, but growth funding, working capital, and whatever. At a stage, private equity will also give you secondary funding, like you want to exit partially, so you can take that money home. So, but initially, family offices and venture capitalists will only give you primary, but once you scale up, you can also get secondary funding. Then third option is, of course, market, right? So SME is a very beautiful platform. SME, BSc, SME, NSC is a very good platform where you can raise at any level. Like, they have, even for startup also, they have a platform. And I'm sure these people will connect you to, SME listing. So that's a very good platform. Unfortunately, only 500 companies are listed there. So in a country of 140 crores, only 500 companies in BSc, SME is listed. That means we are not aware that, there is a certain platform like that. So it's a beautiful platform. A lot of people start looking at you, you can attract. With my own experience, I'll tell you, it's a super platform. It has changed, our trajectory completely. So a lot of good people, investor comes to you, and then, a lot of talent you can attract. And you get P, based on P, you get, and if you're a tech company, you will get good valuation. So here, both debt and growth funding, both are possible through market, and both primary, initially, of course, primary, and once you scale up, here also secondary is possible, right? So these are the three ways. That's all. So if you have any question, you can ask. What is that? So you have to search investment bankers like these people, Smita and all can help you with this. And you have to search an investment banker. So these people can help you finding an investment banker, or they themselves can find you out, right? And then they connect you to all the family offices. So all industries like, Tata's or Thermax or, any Tapadia, and every company, every entrepreneur have their own family offices. There is a saying that banks remove umbrella when the rains come. So I'm on your side. So bank give loan to the people who don't want the loan. I am totally with you. They remove the umbrella when the rains come. Yes. 415 pages, book page to rain. Thanks. But unfortunately, they have some guideline, right? So they are governed by that. So, so they go by the guidelines, right? Thank you. Yeah, please. Thank you. You talked about in approaching investors if it's a sunrise industry, right? Like if you have a new idea. But what happens if like there is a market and it's monopolized and you want to break a monopoly? Is there any way to approach the investors in that case? Like you talked about many points how to do that, but if the market is monopolized, how do you approach the investors? So probably I'm mistaken. Investor will invest in every type of industry, okay? So I was saying that when you look for a new idea, look for a sunrise. But investor will invest if he sees, answer in all those points. If he thinks it is, all tick, 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 he will invest. Okay, so same rules goes for the approaching an investor in any case? Yes, yes, yes. You said you were in Germany.
I was in Germany working. I was working. Yeah. So why you came back? Why I came back? Because they never allowed me to stay in first place. Visa reason you came and you become entrepreneur. Yeah, so I tried a lot. I have 2 successful companies and 14 failed ventures, by the way. So I'm through and through, I keep trying a lot of ideas. Yeah, you have some question, right? Sir, Yeah, please. if POC is done, proof of concept, and we have another product lined up, at the same time we are selling the POC product in the market, can we entice family-owned businesses or family-owned investors for the same around 5 crores of investment? So I don't know 5 crores or 10 crores. Yeah, okay. We have to see the... That is there, yeah, I right? can understand. But then the first product, which is POC, and the second product, which is coming in the same kind of Yeah, product? the same technology, only thing is a slightly better one, or the better, better advanced technology. Yes, yes. Investor will be happily looking at that. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Yeah, thanks a lot. Thank you, sir. See, if you'll see the agenda, we have a lot of speakers and we are bound by the time. So I'll request all the speakers to constrain their time. And now, thank you, Mr. Podole. Now I'll invite Mr. S. Balaji, Assistant General Manager, Punjab National Bank, to talk on the MSME schemes for Punjab National Bank. Good morning, friends. Thank you, Salunke Saab, for this opportunity to meet the MSME entrepreneurs and the fellow speakers. So happy to be here in front of you to have an opportunity to interact with you people, the MSME backbone of the Indian economy, rather to say. And secondly, everywhere what happens is that MSME lending, wherever it goes, across the country we have been there, the funding part becomes an issue, like as it was pointed out by previous speakers also. होता क्या है उस पे ideas are there. They have good ideas, startups are coming up and they see the opportunities, उनको orders मिल रहा है, उनको यहाँ पर way forward दिख रहा है, उनको फंडिंग का ज़रूरत रहता है, then they go to the banks and all. तो what is the gap कहाँ पर है, वो थोड़ा address करने का प्रयास में मैं हूँ. I represent, as a brief introduction, I represent Punjab National Bank, which is one of the leading nationalized banks today in the country. We head the MSME lending unit here in Pune. For Pune district, we head the MSME sector. Out of total Pune district's MSME lending, Punjab National Bank holds the share of 19% today. We have got 65 offices across the district actually to fund the MSME units. So my presentation, basically I have got a small presentation. The presentation is basically to tell you about what are the different schemes which are there, which is very popular, which are very easy to discuss with the bankers and get the lending. That is one part of it. My point is again to refer to the another part of it where all of you, I believe, like, you have already a banking facility with some bank or the other somewhere, because banking facility, without banking facility, MSME sector is not going to flourish, grow. But there are issues for your enhancements, for your renewals, for your capex expansion. I would like to point out on certain issues where there is a gap between what the banker's requirement is and what the entrepreneurs, what are the papers, what are the documents, what are the things which entrepreneurs are able to provide, and how the bridge can be bridged, gap can be bridged that way. होता क्या है उस पे these MSME sectors में, first I'll go through the different schemes of Punjab National Bank basically. See, there are schemes like I have brought, there are a lot of schemes are there. I have brought a small write-up about the 7 schemes. I'll even leave the presentation to the forum also. The forum can send across email to you also, so that you can need not note down things. You can have a
proper this thing with your email also, you can take it. That is not a problem. So out of these schemes, within the available time frame, I like to dwell upon some of the major schemes of the bank actually. The MSME Prime Plus is the flagship scheme of Punjab National Bank. Point number one. This scheme basically points to all the requirements of the entrepreneur, whether it is a manufacturing unit, whether it is a service unit, whether it is a trading unit, or whether it is a contractor, whatever is the nature of the activity, all these schemes are covered by this. This MSME Prime Plus is the major flagship scheme of the bank. And secondly, there is a thing called GST Express. This GST Express is a scheme which basically looks into the GST returns which are filed by the units. होता क्या है, major of the times, lot of financial information are called for from the customers, from the entrepreneurs. Entrepreneurs are not able to provide those information. But this GST is basically the GST returns, whatever has been filed. On the basis of that, if you decide the loan amount, that is done through the GST, this thing, express thing. And third one, mainly, obviously, this Export Express scheme is there, which caters to the export in both pre-shipment and post-shipment finances part of it. And then last one is the Sampatti scheme. These four schemes, rather, are directly cater to the MSME sector. These 4 or 5 schemes directly cater to the MSME sector. The PNB Sampatti scheme basically is a loan against property. If we are not able to fit into any of the schemes, then this is one of the schemes which can be easily looked upon, seeing the promoter is a new entrepreneur. They are not, even that without collateral securities also, now CGTMSE we go to up to 5 crores, right? Earlier it used to be 2 crores, now it has been increased to 5 crores. That is also there. And then this PNB Sampatti scheme basically talks about the loan against property thing. And discounting of bills is a very popular, common thing which had been in force, in vogue for a long time, which is very popular also, easy to do also. Now discounting of bills has taken very multivarious shapes basically. Now you get the online trading platform also for your bills and all. All your bills, you can get it listed on the platform also, and platform will obviously come to you, will offer to you, will come to you on your mobile phone and then tell you that this is the rate at which I am going to give you. If you are acceptable for the rate, you can directly get it discounted, those bills also. The earlier process of, going to the bank with the documents, all those things are now gone. Even today, that e-trades platform, lot of platforms, online platforms are available where you list your documents, and that is being taken care by this discounting of the bills. And last two schemes are basically, this advances to real estate and solar energy finance, we have included it. But that doesn't directly relate to the MSME sector. If time permits, we will discuss that. I will go through the other schemes basically. And while discussing the schemes, my point is not here just to tell about the schemes and go away. I know the problems of MSME units. I had been associated with MSME lending across the country in different places for a period of last 2 decades, basically. We very, very well, we take the punch from the entrepreneurs saying that bankers are not supporting, they remove the umbrella when the rain comes. And we have been with the system also. Hota kya hai? This is like I always tell people, MSME entrepreneurs, like it is like a spouse का जो bonding है ना, husband wife का जो bonding है, उस type का है. होता क्या है, उस पे banker को भी there are certain guidelines, set rules, regulations. We are not a private equity investor. We are not a family-owned investment house where a decision is taken by an individual or a group of individuals. We are just maybe we are at some helm of the bank's position, but end of the day, we are like some individuals who are into following of guidelines set by lot of people, right? Regulators, Reserve Bank of India, everybody is there. So within these regulations, what best can be done to the MSME entrepreneurs? MSME entrepreneurs, we feel like they are the main heroes where that manufacturing, वो हिम्मत करता है जा करके कुछ करने का. Now I see people from JSW Steel, right? We had been a banker to JSW since long, basically. But then a corporate becomes a big corporate conglomerate. It becomes 100 crore, 200 crore, 500 crore, 1000 crore turnover. Then
whatever they say, उनका कुछ ना कुछ कहीं से कहीं solution मिल जाता है. But what happens to a small borrower who needs a working capital of say 2 crore, 5 crore, जिसका turnover 20 करोड़ है, 30 करोड़ है, तो उन लोगों का जो है वो problems हम समझ पाते हैं. मतलब we don't say that there are no problems. There are issues, there are difficulties, there are problems, ideas are good. But साथ साथ में ये जो problems का whatever practical solutions, because we have been experiencing MSME sector across the country for last 2 decades at least. So in case if any questions are there, I'll take your questions also. And साथ साथ में I'll guide you also like क्या करना है क्या नहीं करना है करके. इसमें as I told you, this is the main scheme. इसमें आप देख सकते हैं कि these are all very normal things only. Working capital करेंगे, term loan करेंगे, bank guarantees, LCs, whatever are the requirements for the MSME sectors वो किया जाएगा. और क्या requirement क्या है सर, उस पे GST registration करना है और उद्यम registration रखना है. That's it. इसके अलावा कुछ नहीं. और क्या कौन सा फैसिलिटीज़ क्या टाइप का होगा सर, तो बैंक गारंटी होगा, कैश क्रेडिट होगा, टर्म लोन होगा, आपका कोई कैपिटल एसेट क्रिएट करना चाहोगे मशीनरी वगैरह का वो कर सकते हो. सी द क्वांटम ऑफ फाइनेंस, देयर आर सर्टेन यूएसपीज आल्सो. माय लेक्चर शुड नॉट बी बोरिंग, इसलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज इट्स नॉट दैट बोरिंगली, मतलब मैं ये पढ़ाते जाऊँगा ऐसे ही एंड देन आई विल जस्ट क्लोज माई टॉक एंड गो अवे, ऐसा नहीं है. इसका जो यूएसपीज है, व्हाई आई ब्रॉट दिस स्लाइड, इस स्लाइड में क्या खासियत है. आप बोलोगे सर तो हर बैंकर करता है, every banker is doing that. कुछ मतलब what is why you are standing in front of us? What is the special about you? तो यह है कि see the quantum of loan. Quantum of loan up to 100 crore can be done in a single scheme only. That is one. And secondly, this rate of interest today's date. Actually, rate of interest also it is linked directly with the repo rate of RBI. As everybody feels like sir rate of interest बढ़ गया है. Quite common question, common problem which I come across from all the MSME investors, like sir इतना rate of interest में सर हमें जमेगा नहीं, we don't make that much of profits. But what do we do actually? We also work on very thin margins. मतलब there is a RLLR, repo rate. Whatever rate at which the RBI is able to lend to me, and I just put my spread on that. See, the spread can be seen here. Spread is as low as 20 paisa. 20 paisa का margin पे we start the work MSME का. And the slides and all it will be provided to you. मैं आपका email ID पे मैं उनको request करूँगा सालुंके साहब को जरा उसको communicate कर दें उनको. All these things are there. आपको कहीं पर भी कोई issue है, मेरा मतलब कार्ड भी इधर दिया हुआ है, मेरा नंबर आप ले सकते हो for guidance और clarifications any time. तो यही है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बैंकर का साइड से आप देखो whatever cost which I am getting उसके ऊपर मैं 20 पैसा का मार्जिन पे मैं आपको लेंड करने के लिए रेडी हूँ. पॉइंट नंबर 1. एंड देन रीपेमेंट मॉरेटोरियम, मतलब यूएसपी इसमें यह है कि 100 करोड़ तक एक ही स्कीम में और 20 पैसे का मार्जिन मेरा, ठीक है. एंड देन वर्किंग कैपिटल एनुअल बेसिस में, और टर्म लोन का जो टेनार है वो पहले 5 years हुआ करता था, बाद में 7 years हुआ करता था, आज 10 years. 10 years किस चीज़ का? सिंपली फॉर योर इक्विपमेंट फंडिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बड़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी जिसमें मतलब 15 साल तक भी जाता है, 20 साल तक भी जाता है. नॉट दैट. नॉट योर हाउसिंग लोन्स वेयर योर टेन्योर एक्सटेंड्स अप टू 30 years. नॉट दैट. सिंपल आपका इक्विपमेंट का जो फाइनेंस होगा उसमें भी नाउ वी कैन गो अप टू 10 years. और ये जो नॉर्मली प्राइमरी सिक्योरिटी पे हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स, वॉट एवर एसेट्स यू परचेज दैट विल बी हाइपोथिकेटेड टू द बैंक. एंड देन कोलेटरल सिक्योरिटी में 30% से लेके, तो ये क्वेश्चन आता है, ये भी मतलब दिस वन पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टेल अपॉन. सर कोलेटरल आप ज़्यादा मांगते हो. ऑब्वियसली सारे बैंकर जो है यही क्वेश्चन उनको जब वो एमएसएमई के अंदर एंट्री करता है तब से जो है वही सुनना पड़ता है. सर एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा करते हो और कोलेट्रल ज़्यादा मांगते हो. हाई नहीं सर कोलेट्रल क्या करें. सी 30% कोलेट्रल तक आ गए हैं. ओरिजिनली हम लाइफ स्टार्ट किए थे व्हेन आई वेरी क्लियरली रिमेंबर एमएसएमई सेक्टर को हम स्टार्ट कर रहे थे फंडिंग विंडिंग. 100% कोलेट्रल में भी नहीं कर पाते थे, उससे ज़्यादा कोलेट्रल मांगते थे, मे बी 20 years ago and all. Now slowly things are improving. What I am saying is, as I told you, bankers are not individuals who take decisions. It is actually the board, actually the government. But still, what government has done, maybe different governments have come, but end of the day, from 100%, we have come to 30% minimum level collaterals पे. Even this 30% collateral भी आपको next line आप पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा कि up to 5 crore माइक्रो टू स्मॉल कैटेगरी बोरोवर होगा, तो अप टू 5 crore का जो है CGTMSE कवर पे आप ले सकते हो. कोई आपको मतलब
कंपल नहीं करता है कि मेरे को कोलेट्रल दे दो। बट कोलेट्रल में एक पॉइंट मतलब इनका बहुत अच्छा था कि सर कोलेट्रल पे कहाँ तक मतलब हम 30% कर पाएंगे। मे बी आप 10 करोड़ का लोन कर रहे हो, उस पर हम 30% कर पाएंगे। मे बी 20 करोड़ का लोन कर रहे हो तो 30% कर पाएंगे। देन गो टू JSW स्टील, यू विल बी लेंडिंग 1000 करोड़, उसमें क्या 300 करोड़ का कोलेट्रल मांगा जाएगा? इट इज़ नॉट दैट वे। होता क्या है, थोड़ा व्हेन द बिजनेस ग्रोज तब उनको जो है वो कोलेट्रल्स का जरूरत रहता है, एंड देन बिजनेस का थोड़ा ग्रोथ हो जाता है उसके बाद। देन द क्वेश्चन ऑब्वियसली कम्स, सर उल्टा होना चाहिए था। जब आदमी ग्रो कर रहा है तब आप जीरो में फंड करो, और आदमी अच्छे से ग्रो कर लिया है तो JSW स्टील में जाकर के आप 50% का कोलेट्रल मांग लो। That is also a question. But slowly, my point is, question is well taken. We are also simple people like you. You are sitting on the other side in the manufacturing unit. We are sitting on this side as a lender, as an investor, as a funding person. First available lender तो मैं ही हूँ. Maybe you go to that private equity, maybe you go to that family things. But end of the day, across this table, जितने भी इन्वेस्टर बैठे हैं उनको सबसे पहले माइंड में आने वाला, ठीक है कौन सा बैंक मेरा कर सकता है, बिकॉज बैंकर्स आर इजीली अप्रोचेबल। उनका वो आपका प्रॉब्लम बोल सकते हो, वो समझ भी सकता है। एंड वी हैव स्लोली कम फ्रॉम समथिंग लाइक 100% कोलेट्रल से ले करके 30% कोलेट्रल, और भी अभी 5 करोड़ तक के फंडिंग करना हो तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कर लो। आपका आइडिया अच्छा रहना चाहिए। वी ओनली लुक एट व्हाट इज द profitability prospects. What is the profitability prospects? And I accept Padole sir से एक point कि bankers lend to either capex, आपका मशीनरी का लेंडिंग करता है, आपका फैक्ट्री का लेंडिंग करता है, आपका वर्किंग कैपिटल का लेंडिंग करता है, आपका बैंक गारंटी देता है, LC देता है, बट नॉट योर ग्रोथ फंड। वो पॉइंट है ही, आज वो इश्यू है ही, उसको तो आगे जाकर के गवर्नमेंट विल डू समथिंग टू एड्रेस दैट। देन द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अ ग्रोथ फंडिंग? ग्रोथ फंडिंग क्या है वो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। ग्रोथ फंडिंग ये है, मैं आज सीड डालूंगा, आज बीज डालूंगा, मेरे को उसमें फ्रूट्स मिलेंगे 10 साल के बाद में। मैं कॉन्फिडेंट हूं मेरे आइडिया के ऊपर, कौन मेरे को आके फंड करेगा? राइट? मेरे पास में आइडियाज है, वो आइडियाज़ को आप बोलोगे, बैंकर बोलेगा कि नहीं मेरे को विदिन 1 ईयर मेरे को रिजल्ट दिखना चाहिए, विदिन 6 मंथ्स दिखना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम, मे बी 2 years, मे बी 3 years। तो वहाँ तक वेट करके वो फंडिंग करने का स्कीम आज का तारीख में एटलीस्ट हमारे पास में नहीं है। इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। बट पॉइंट ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि सी हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड एक्चुअली। 100% कोलेट्रल से लेकर के 30% कोलेट्रल तक के, एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको याद होगा 14%, 15% पे हम लेंड करते थे। आज भी देयर आर प्राइवेट लेंडर्स, NBFCs डू इट 18%. 18% में MSME people have taken up. I don't know, maybe some of you sitting here also, they would have taken the lending at 18% also. They call it as an unsecured loan, they call it as what not, बहुत सारा nomenclature उसमें रहता है, and they give you at 18% and all. 18% का margin नहीं है MSME में उतना, हम जानते हैं, because we had been with MSMEs also. So slowly things are also changing. It is not that things have not changed. Things have shown a very clear change towards the positive. And slowly this growth funding का जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी सिस्टम है, और कितने लोग हम जानते थे कि ये जो बिल को, इनवॉइस का फंडिंग को हम ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के एक सिस्टम में अपलोड कर दें और वहाँ से मेरे को वो डिस्काउंट हो करके मैंने जो सेल किया, मेरा जो सेल इनवॉइस का फंडिंग है मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। हमारा स्कीम वो भी है, उस पर मैं वो भी दिखा सकता हूँ। उसमें देयर आर, आपका इनवॉइस डायरेक्टली अपलोड कर दो, अपलोड करके उसमें ऑटोमेटिकली पीपल विल कम, बैंकर्स विल कम सीइंग योर, किसको बेचे हो आप, क्या अमाउंट बेचे हो, आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो सारा चीज़ आपका GST नंबर से, आपका पैन नंबर से ऑटोमेटिकली सिस्टम ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चेक होता है, और बैंकर आपके पास आता है कि मैं 8% में कर देता हूँ, 8.5% में कर देता हूँ। तो इतना चेंजेस तो आ ही गया ना बैंकिंग में। वी हैव सीन बैंकिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स। तो उस समय पे तो इनवॉइस फंडिंग तो होता ही नहीं था। धीरे धीरे करके फैक्टरिंग आया, धीरे धीरे करके उसमें इनवॉइस का फंडिंग आया, इंपोर्ट बिल का फाइनेंसिंग हम करते थे। मतलब देयर आर लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स विच आर एमर्जिंग, बट एनी एमर्जिंग थिंग विल टेक टाइम। मतलब ग्रोथ के लिए any emerging time in a country like India, where there are multivarious aspects involved in anything, it will take time. I am only pointing out that there are changes which are happening. ठीक है? So these are the charges which I have given here. These are the charges which I have given. This is the
पंजाब नेशनल बैंक का ये चार्जेस है, आई डोंट से दैट ऑल द बैंक्स में बी द सेम थिंग। और एडिशनल फीचर्स में ये देखेंगे कि लोन फॉर इक्विपमेंट्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स भी किया जा सकता है इस पे प्राइम प्लस के अंदर में। एंड देन उस पे अप टू 1 करोड़ का जो भी आपका कमर्शियल इक्विपमेंट्स होगा वो भी उस पे ऐड किया जा सकता है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, एमएसएमई विशेष करके एक प्रोडक्ट है दैट गिव्स यू ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ फैसिलिटीज ऑल्सो। अडहॉक चाहिए सर, ये तो अक्रॉस द बोर्ड मैं एक मतलब वीक में 2-3 रिक्वेस्ट तो मेरे पास आता है एमएसएमई क्लाइंट्स का, सर अभी अडहॉक चाहिए, मेरा वर्किंग कैपिटल लिमिट 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, मेरे को आप इतने अमाउंट का अडहॉक दे दो। वो आजकल स्कीम में ये भी आ गया है कि दैट अडहॉक लिमिट ऑल्सो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड। आपको 20% तक अडहॉक लिमिट जब आप चाहो तो उस समय पे आपको वो दिया जा सकता है, दैट इज ऑल। एंड देन दूसरा एक है, ये भी एक अच्छा चीज़ है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आई वांट टू हाईलाइट हियर टू द एमएसएमई पीपल। मतलब उनको वो बहुत बोरिंग हो जाएगा इफ आई कीप ऑन सेइंग दैट सर मैं इक्विपमेंट को फंड करूंगा, मैं आपका सिविल कंस्ट्रक्शन को फंड करूंगा, 75% तक जाऊंगा, ये सब चीज़। सी दिस थिंग, नाउ देयर इज अ ओपन एंडेड टर्म लोन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ ओपन एंडेड टर्म लोन। ओपन एंडेड टर्म लोन इज समथिंग लाइक ऑन योर कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान्स आप हमें सबमिट कर दो, हम उसको चेक करके असेस करके हम आपको बताते हैं कि ठीक है सर वी आर एक्सेप्टेबल, 2024-25 में आप 10 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंशन करने वाले हो, उसके लिए 7.5 करोड़ तक मैं फंड कर दूंगा। आप क्या मशीनरी लोगे, कहाँ से सिविल कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या इक्विपमेंट्स लाओगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, अभी मतलब मेरे को वो सब चीज़ सबमिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू टेक योर टाइम, आप पूरा आप अपने आप डिसाइड कर लो। आपका बैलेंस शीट देख करके मेरे को मतलब इतना तक फंड करने के लिए रेडी हूँ। आई विल नॉट आस्क यू अबाउट व्हाट मशीन्स यू आर बाइंग, वेयर इज़ योर प्रॉपर्टी, वेयर इज़ योर, आपने अभी तक जो है एमआईडीसी के साथ में एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, और आपका जो मशीनरी है वो जर्मनी से बाई करना है या चाइना से लाना है वो अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं किया। लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए बैक ऑफ द माइंड में कि यार बैंकर करेगा नहीं करेगा, तो इसके लिए ये ओपन एंडेड लोन्स आज आ गए हैं बेसिकली कि ये करें करके। दिस थिंग वी कैन टेल यू कि विद इन 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर में आप कर लो आपका कैपेक्स एक्सपेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वी विल फंड यू बोल करके, वो भी स्कीम्स है। एंड दिस इज अगेन वन सिंपल थिंग, जीएसटी एक्सप्रेस, ई जीएसटी एक्सप्रेस। तो जीएसटी एक्सप्रेस के बारे में एक पूरा पेज लिखा हुआ है, बट आई वांट टू पॉइंट आउट कि उस पर यूएसपी क्या है, व्हाट इज दिस। ये जो स्कीम है इस पे देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल एमएसएमई यूनिट्स जिनको जा कर के हम बोलते हैं कि ये आप मेरे को फाइनेंशियल्स दे दो, ये रेशियोज ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, एंड देयर इज़ अ गैप एक्चुअली, वी सी दैट कि हम जो बोल रहे हैं वो दे आर नॉट एबल टू मीट आउट। इसके लिए सिंपल जो है ये आप, मैंने जो ग्रीन में लिखा है ये देख लो, आपका जो जीएसटी रिटर्न क्लियरली बोलता है कि कितना आपने सेल किया है, लास्ट 12 मंथ्स का जीएसटी रिटर्न आप ले लो, उसका 25% का फंडिंग आपको मिल जाएगा। अस्यूमिंग दैट आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है दैट इज 3 मंथ्स का साइकिल है, 90 डेज का साइकिल है, वी अस्यूम दैट एंड वी प्रोवाइड यू 25% ऑफ द जीएसटी सेल्स। इसके लिए जीएसटी रिटर्न्स, आप जीएसटी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना जरूरी रहता है, आप जीएसटी रिटर्न्स दे दो जीएसटी रिटर्न्स के बेस पर। उसमें वी विल नॉट कम एंड आस्क यू लाइक आपका 3 साल का बैलेंस शीट लाओ, आप फ्यूचर का प्रोजेक्शन लाओ, आप कल क्या करोगे, ये होगा वो होगा, वो कुछ नहीं। दिस इज वेरी सिंपल प्रोडक्ट वेयर यू कैन डू दैट ऑन, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसा मैंने जो पहले बताया था वैसा ही कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ऐसा है, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीस, चार्जेस वगैरह यहाँ पर है। और इसमें देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ न्यूली हैव कम अप, वो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ इस माध्यम से, बिकॉज बैंकर्स ऑल्सो कितना टेक्नोसवी होकर के, कितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आपके नज़दीक करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो लास्ट लाइन आप देख लीजिए, the eligible customer will visit the bank का website, select this thing, आप ऐप में भी कर सकते हो, not even go to the website, उस पर करके you can apply on eGST Express and loan up to 1 crore. Maybe this amount is small today, but मैं क्या बोल रहा हूँ, यू नीड नॉट गो टू बैंक ओनली, बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, जो भी बैंक है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक होगा, सेम प्रोडक्ट्स दूसरे बैंक में भी होते हैं, तो वो बैंक का आप वेबसाइट में जा करके आपका बस अकाउंट होना जरूरी है, आपका जो बिजनेस एंटिटी है उसका पैन नंबर पे, जीएसटी नंबर पे बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट होना जरूरी है। आप वो ऐप में जा करके डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई करके आप लोन ले सकते हो, अप टू 1 करोड़ ई जीएसटी एक्सप्रेस आजकल अवेलेबल है। यू नीड नॉट इवन विजिट द बैंक ओनली, कोई कोलेटरल नहीं मांगा जाएगा, कुछ नहीं।
And then this is again one of the good schemes which banker has. उस पे एक्सपोर्ट एक्सप्रेस करके नाम है, एक्सपोर्टर्स के लिए फंड करते हैं हम लोग. प्री शिपमेंट भी होता है, पोस्ट शिपमेंट भी होता है, आपका पैकिंग क्रेडिट मिल जाता है. मे बी मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. कुछ नया चीज़ नहीं है. उसमें भी मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली वो ग्रीन में वो चीज़ लिखा है इस पे. रेट ऑफ इंटरेस्ट में जनरली बैंकर कोट करता है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, मिनिमम हम 8% में करेंगे सर, मिनिमम हम 9% में करेंगे सर. इस पे आप देखिए, देयर इज अ वर्ड विच आई वांट टू सी, आई वांट यू टू सी. मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट टुडे इज 8%. एमएसएमई को, एक्सपोर्टर्स को 8% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आज नेशनलिस्ट बैंक फंडिंग दे रहा है आपको एक्सपोर्ट करने से. आप प्री शिपमेंट भी ले लो, पोस्ट शिपमेंट भी ले लो, और पोस्ट शिपमेंट का टाइम भी 9 मंथ्स तक है. 180 डेज था, उसके बाद में इवन दैट हैज कम टू 9 मंथ्स एक्चुअली. 9 मंथ्स तक आपका एक्सपोर्ट बिल रिलीज होता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगने वाला है. तो वो देयर आर सर्टेन, दीज आर दी plus points or USPs of this particular MEMS. मतलब even if you take a PCFC, आप बोलो कि सर मेरे को आप डॉलर में दे दो, यूरो में फंड कर दो, मेरे को फॉरेन करेंसी का रिक्वायरमेंट है, मेरे को पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में करनी पड़ती है, मेरा इनफ्लो भी फॉरेन करेंसी में होता है, तो उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए. अल्टरनेट ARR से वेदर इट इज़ लाइबर और साइफर वॉट एवर इट इज़, उसके ऊपर 2% का चार्जेस है. ओनली 2% का स्प्रेड है बैंक का. जो भी उस दिन का रेफरेंस रेट है उसके ऊपर 2% का चार्जेस लेकर के यू कैन डू दैट. दिस आर ऑल नॉर्मल थिंग्स ओनली. एंड देन दिस कोलेटरल्स का भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि 30% मिनिमम लेवल तक आज आ गए हैं. उसके ऊपर भी कस्टमर का जो जनरली एक रिस्क रेटिंग करके होता है, ऑल द बैंकर्स आर डूइंग, मतलब MSME रेटिंग होता है, कॉर्पोरेट रेटिंग होता है. दैट रेटिंग आल्सो गिव्स यू बेनिफिट्स ऑफ एंजॉइंग क्रेडिट फैसिलिटीज एट अ लोअर कोलेटरल्स. तो रिस्क रेटिंग कहाँ से इंप्रूव होगा? रिस्क रेटिंग जो इंप्रूव होगा वो बैलेंस शीट से. एंड मे बी आई लिटिल वेल अपॉन कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बैंकर्स आल्सो. ये मेरा स्कीम खत्म होने के बाद में कुछ मतलब क्या पॉइंट्स पे क्लाइंट का कमियां, क्लाइंट का जो थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए, वो जो क्या बैंक मैनेजर क्या मतलब महसूस करता है, वो इस साइड ऑफ द टेबल में बैठ करके फंड करने के लिए तो रेडी है, पर लेकिन उसको क्या मतलब वो रिक्वायरमेंट रहता है, दैट विल आल्सो आई विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो. ये जो है एक्सपोर्ट एक्सप्रेस के अंदर में बेसिकली दिस कोलेटरल आल्सो नाउ अप टू 5 crores straight away without a collateral under CGTMSE funding. All banks are doing across the board. All banks are doing without collaterals basically. And this is one scheme is a loan against property. सारे बैंक में होता ही होगा ये स्कीम, हमारे बैंक में भी है. In case if you are not able to fit into the things like बैलेंस शीट लाओ, कितना टर्नओवर आपने किया, वो टर्नओवर बहुत कम है, इस टर्नओवर में इतना लिमिट्स होगा नहीं, आपका अकाउंट में पहले प्रॉब्लम था, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ यदि रहता है तो दिस इज अ ऑप्शन विच यू कैन लुक इनटू. संपत्ति स्कीम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला स्कीम है. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में स्ट्रेट अवे वी सी दैट वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी देख करके उस पर as a percentage of this thing, maybe 60%, maybe 65%, maybe 75% of the value of property, we directly fund to you. That 60, 65, 75% depends basically on the performance of the company. वो कैसा मतलब टर्नओवर क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था. बट अदरवाइज उसके बाद में सर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करो, मैं मेरा स्टॉक ऑडिटर को भेजूंगा, मैं मेरा कार्ड ऑडिटर को भेजूंगा, वो ऑडिटर जाएगा, ये ऑडिटर जाएगा. एमएसएमई ऑब्वियसली परेशान हो जाता है, सर ये एक सीए को लेकर के मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सीए को लेकर के आप भी 4 सीए को मेरे पास भेज देते हो कि ये ऑडिट करो वो ऑडिट करो. कुछ नहीं, सिंपल आपका प्रॉपर्टी यदि है तो कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपका कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो आप बैंक में मॉर्गेज में दे सकते हो. उसका वैल्यूएशन का मे बी 75%, मे बी 60-65% तक बैंक डज अ फंडिंग टू यू. अच्छा, एंड देन दिस इज द LC डिस्काउंटिंग थिंग. मेरे को रिमाइंडर आ रहा है कि टाइम ज़्यादा नहीं है तो आई नीड टू क्लोज. आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस आल्सो, दैट्स नॉट अ थिंग. आई विल क्लोज विद इन टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम. तो दिस इज अ LC डिस्काउंटिंग थिंग, अगेन अ simpler form. If I tell you, you have a LC and you get it discounted with any bank. If at all there is a LC with you, you get it discounted with any bank. और ये LC के अंदर में भी आप बोलोगे सर तो मतलब ये हर बैंकर तो करता ही है, LC डिस्काउंटिंग मैं भी करता ही हूँ. LC डिस्काउंटिंग इज अ वेरी सिंपलर फॉर्म ऑफ डूइंग गेटिंग दी वर्किंग कैपिटल फंड्स बेसिकली. और इस पे USP ये है कि यू सी दैट
8% रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 90 डेज। आपका 90 डेज के अंदर में फंड्स रिलीज हो रहा है और एलसी के अंदर में डॉक्यूमेंट है, तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आज हम फंड करेंगे और नो कोलेटरल आस्क्ड, नो कोलेटरल आस्क्ड, बिकॉज एलसी तो दे रहे हो, उसके बाद मेरे को कोलेटरल का क्या ही जरूरत है। आई एम क्लियर ऑन दिस? हाँ ठीक है, आई क्लोज दिस थिंग। तो दीज आर दी थिंग्स जो है बेसिकली, दीज आर दी स्कीम्स विच आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू। एंड देन थोड़ा लास्ट 2 मिनट्स मैं लूँगा थोड़ा फ्रॉम अ बैंकर्स परस्पेक्टिव। देयर इज ऑलवेज अ मिसमैच, तो ऑब्वियसली व्हेन वी मीट यू नो द forum feels like no, you remove the umbrella. So we keep on telling people no, हम तो umbrella लेके खड़े हैं, आप आ ही नहीं रहो लेने के लिए। तो ठीक है, well taken, it is MSME's complaint always रहता है कि, and then my point is there are some 2-3 things which I basically tell you. Many of the entrepreneurs when they go to the banker, आप कितने लोग आपका बैलेंस शीट के बारे में अच्छे से जानते हो? Honestly बोलो मेरे को, let us not be very मतलब ऊपर से ना बात करें। आपका बैलेंस शीट को आपको सिखाने के लिए आपका सीए का जरूरत आपको रहता है। Why should that be? तो आप, बिकॉज बैंकर क्या करता है, ठीक है, आप बैंकर के पास आके क्या कहते हो, सर मेरा टॉप लाइन इतना हो गया, इतना टर्नओवर हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड, लेकिन आपका बॉटम लाइन क्या है, कितना प्रॉफिट्स को आप रिटेन किए हो? सीए का रोल तो सीए प्ले करता है, सर मैं बैंकर से लोन करा दूंगा, अभी इतना टैक्स बस पे करो, दैट एंड्स द मैटर। तो वो कंफर्टेबल भी लगता है, बट एंड ऑफ द डे बैंकर का जो रिक्वायरमेंट्स रहता है ना, वो थोड़ा आप समझ लो। आपका बैलेंस शीट को आप समझ लो, दूसरों का बैलेंस शीट पढ़ना अलग बात है, खुद का बैलेंस शीट में क्या क्या एंट्रीज है क्या नहीं है। व्हेन यू गो टू द बैंकर तो बेसिकली बैलेंस शीट से ही चलता है। और आई हैव सीन मेनी ऑफ द केसेस वेयर उनका एमएसएमई सेक्टर अच्छा खासा ट्रेडिंग कर रहा है, अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बट उसका बैलेंस शीट में आप 2 बेसिक क्वेश्चंस पूछ लो, वो बोलेगा नहीं सर मेरा सीए आएगा बताएगा। दैट शुड नॉट बी द केस, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज प्लीज whatever are your returns, please file them on time, no delay in returns। मैं बैंकर को जो सबमिट करने वाला स्टॉक स्टेटमेंट हो गया, क्यूएमएस फॉर्म्स हो गया, उसके बारे में नहीं कहता हूँ। आपका जो रिटर्न्स रहते हैं, जीएसटी रिटर्न्स रहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न रहते हैं, अदर सेल्स टैक्स रिटर्न्स रहते हैं, जो भी है उसको थोड़ा आप टाइमली फाइल कर दोगे तो दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर रेटिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बिकॉज आजकल एवरीथिंग ऑनलाइन हो गया, आपका जीएसटी में हम घुस जाएंगे तो सब कुछ दिख जाता है हमको, तो उस पर आपका जब रेटिंग इंप्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली एनी बैंकर, वेदर इट इज पंजाब नेशनल बैंक, वेदर इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, दे विल बी हैप्पी टू लेंड यू एट अ कंफर्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज आपका रेटिंग बढ़ जाता है। आप मतलब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को आप 100% फुलफिल कर दो। मेनी ऑफ द कंपनीज आर डूइंग, बट देर आर मे बी आई सी 30 to 40% ऑफ द कंपनीज जहाँ पर कुछ रीजन है, सर एजीएम नहीं हुआ, सर ऑनलाइन फाइलिंग नहीं हुआ, इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम क्रॉस हो गया, बट स्टिल आप आरओसी में जाके देख रहे हो बैलेंस शीट अपलोड ही नहीं हुआ है, और बैलेंस शीट वहाँ पर जो अपलोड हुआ और बैलेंस शीट जो बैंकर को सबमिट हुआ, वो दोनों में there may be some minor changes. So that is point number 2. And point number 3, whenever you give any collaterals to the bankers, मेरा एक simple request है कि try to get it valued on a conservative basis. होता क्या है, सर ये प्रॉपर्टी तो मैंने अभी 3 महीने पहले खरीदा, 4 महीने पहले खरीदा, खरीदते समय पे सर 1 करोड़ तो मैंने नंबर 1 में पे किया, 2 करोड़ रुपया मैंने नंबर 2 में दिया, आप 3 करोड़ का वैल्यू पकड़ लो, कैसा होगा भाई? आपने जो you have purchased the property at 1 crore only 3 months ago, and banker, no banker for that matter can accept the, माना कि वो वैल्यूएशन 3 करोड़ ही है, लेकिन वो वैल्यूएशन भी नहीं कर पाएगा। देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स बेसिकली। बैंकर को ये बोला जाता है कि आप 1 साल के बाद में ही वैल्यू कर पाओगे, आज मतलब उसको वैल्यू नहीं कर सकते हैं करके। एंड सेकेंडली, बैलेंस शीट के अंदर में ग्रुप का इन्वेस्टमेंट्स जो करते हो, हर एंटरप्रेन्योर वाइफ के नाम में कंपनी, ब्रदर के नाम में कंपनी, फादर के नाम में, बेटा के नाम में, वो चलाते रहता है। उस पर इन्वेस्टमेंट्स जो करता है ना, टेक केयर कि होता क्या है, यू हैव ऑलरेडी टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक दैट इज पब्लिक मनी। वो आपका एमएसएमई यूनिट को, आपका यूनिट को फंड करने के लिए दिया गया। इफ़ यू आर लेंडिंग इट टू सम ऑफ द सिस्टर कंसर्न्स थ्रू वॉट एवर चैनल्स, मे बी उसको आप 3-4 बार राउंड ट्रिपिंग भी कर देंगे, फिर भी बैंकर को मालूम तो चली जाता है। तो वो सारा चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। आपका कोलेटरल सिक्योरिटी बैंकर ज़्यादा नहीं मांगता है, बट पॉइंट यह है कि जो आप वैल्यू, आपका मन में जो वैल्यू है, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू, और मेरे मन में जो वैल्यू आपका प्रॉपर्टी के बारे में, वो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। उसके चलते लोन
प्रपोजल जो है आगे नहीं बढ़ता है और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्प्लेजर। तो ये 3-4 पॉइंट्स थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली एमएसएमई को क्यों नहीं मिलेगा। मतलब आई हैड बीन पर्सनली एसोसिएटेड विद एमएसएमई लेंडिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर 2 decades and we had been successful also. So my only request is, if at all any doubts are there, it's a good forum which had given me an opportunity to come share my thoughts also with you. You refer to the forum. मैं सालुंके जी से भी संपर्क में रहूँगा, ले लूँगा, or maybe directly you can call us also. Even for guidance also, you need not take a loan from Punjab National Bank. It is, I'm not trying to market something here. My only point is MSME का जो फंडिंग में जो प्रॉब्लम्स है हम तो देख पा रहे हैं, पेन समझ पा रहे हैं, इसलिए हम ये मौका मिला तो हम आए थे, हम बात करेंगे बोल करके। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स सर। Thank you very much, sir, for your guidance and your expertise in this field. You guided very well. What are the expectations of the banker from the MSME sector? And I think so. This type of session should happen very oftenly on roundtable discussions. So this will be very much informative. Now I'll request Mr. Dubashish Bhattacharya to talk on the finance and investments for the growth of the MSME and manufacturing sector. He is a very dynamic person having experience in private field. He has worked with the private companies and he has in now banking sector, heading the SME portfolio at head office in Bank of Baroda, Mumbai. Over to you, Dubashish ji. सालुंके जी, very good morning to all of you. ये सालुंके जी का प्यार है जो हमेशा हमें खींच के लाता है, कभी राजकोट में, कभी बैंगलोर में, कभी बॉम्बे में, कभी पुणे में. Thank you so much for this opportunity. And I heard the distinguished speakers. Very well said. I think most of my job it is done. I would try and होता क्या है, 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये MSME. Now in this 25 trillion industry, you have to compose and talk in 20 minutes is a very difficult thing to do. So I would try and restrict myself. Whatever has been said by Mr. Balaji, I'll not try and touch those points because those would be repetition. Because whatever PNB is experiencing or state banking is experiencing, same would be the case with Bank of Baroda, slightly here and there. Now let us understand as an institution where do we stand, and I would particularly talk about the public sector banks and what is the predicament we are facing at the moment. हमारी समस्याएं क्या है थोड़ा वो भी आप जान लें. आपकी समस्याएं तो हम डे इन एंड डे आउट सुनते हैं. देखिए हमारी समस्याएं जो है वो सरकार के नियमों पर आधारित है. Let us take one example. How was the MSME landscape or the banking to the MSME landscape say a decade back and what it is today? Banking आपको पता है is a very extremely volatile segment. It is moving so fast with technology embedment and with the times to come. जिस तरह की AI और ChatGPT का एज आ रहा है, हमारे आने वाला जनरेशन, I speak my youngsters, young colleagues out here, there will be little bit of things will be left on the underwriting piece, जिसको हम credit बोलते हैं, underwriting बोलते हैं. This will all get into a kind of software, muddle into a software, and a lot of things will be done through the system. What will remain with a bank or any financial institution for that matter is only the relationship. I keep telling this thing that a relationship is something which will never die as long as human beings deal with each other. आप किसी मशीन से डील करेंगे तो वहाँ रिलेशनशिप नहीं मायने रखता है, लेकिन जब आप किसी इंसान से डील करते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से डील करते हैं, एंटिटी से डील करते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप इज द कोर दैट वर्क्स इवन ऑन द पर्सनल स्पेस एज वेल एज प्रोफेशनल स्पेस. Now what is this relationship? This relationship is something, and that is what we have worked on. You see, a decade back, even pre-COVID and during the COVID, particularly in this government, ever since, see, I'm an apolitical person, but let me comment it very strongly that ever since we have seen the current government coming to force, there has been a sea change in the way the banking has happened, or even the industry has moved. A country like us, which is 140, and which is a hybrid structure, we have the BPL, people below the poverty line, and we have the multi-billionaires also who score in the top rank. सालुंके जी वही बता रहे थे कि there are 50 lakh credit worthy people. The number has actually changed. It has gone to 80 lakhs. So imagine the data which he's carrying and the data I am carrying, which is as recent as the day before yesterday.
there are 30 lakh MSMEs who have moved into the formal credit space. Now, there are 6.3 crores जिन्होंने सही बताया, 6.33 यानी 6.33 crore MSMEs are there in the country. 3.2 crore MSMEs would have availed some kind of credit facilities in the past. Small, big, medium size. Out of which only 80 lakh MSMEs are actually credit active. What is important is how many of them are active, how many of them have gone dormant. ये dormant जो हुए in the past because of COVID, because of some extraneous factors, they would have just vanished in thin air. We have no signs of trace. हमें वो जो 3.2 और ये 80 लाख जो हैं, ये जो लगभग 2 करोड़ के जो MSMEs हैं, इनको उजागर करना है, इनको सामने लाना है. And the way we are rapidly progressing, I'll tell you this government what it has done. Yes, we are a collateral freak organizations, I would say. But जैसे बालाजी साहब ने अभी दिखाया presentation, इनके कई products आप देखिए which are collateral free. The issue is that we keep harping on the same point, collateral. At Bank of Baroda, I'm telling you, we are a 23 trillion balance sheet organization. We are the number 2 public sector bank after State Bank of India. And sir, there may be people who may disagree to this, but they may, to the way of our working, but they will not disagree to one point that we, along with other public sector banks, have stood by this nation, pre-independence, at the time of independence and post-independence. And even today, we are fighting all the fintechs of the world who claim to be actually grabbing the banking space, but they aren't. Let me actually give a very, very polite warning to all of you that all of you sitting out here, including the large corporates like JSW or a Tata or the conglomerates, today they are where they are, it is all because of the banks. It is very easy to criticize any organization, any institution, because हमें जब कोई चीज़ नहीं मिलती है, हमें दुख होता है. I understand, but please understand the predicament of the bank. We are actually caged, or I would say ring-fenced by a set of rules and policies and a rule book. We cannot. It's not a proprietorship firm. We are not a family business, right? हमारी जो संस्था है, हम आज यहाँ पे हम कहीं और चले जाएंगे. बालाजी साहब आज यहाँ हैं, कहीं और चले जाएंगे. We are governed by the rules. इन रूल्स को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले थोड़ी सी सुधार आप अपने अंदर ला दे, जो बालाजी साहब ने अभी बताया अपने सेशन में. There are 4-5 points which you need to focus on. Please be financially literate. Don't take this particular phrase in the wrong manner. Financially literate होना और literate होने में फ़र्क है. आप पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात, आप इंजीनियर हैं, बहुत कुछ हैं, you are a good craftsman also. बट फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है. अगर आपको बैंक से लोन लेना है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लेना है, द इजीएस्ट वे एंड द मोस्ट I would say the most economical way to avail fund is through the banks. I have worked with PE investors and I know how they are. In banking terms, we call them sharks. They look only at, they are extremely bottom line centric and nothing else. उनको अपने profit के अलावा कुछ नहीं दिखता है. So Bank of Baroda, PNB, State Bank of India, or any public sector bank, including the private sector banks, I'm saying they have a huge role to play, not only in the economy, pre-independence, post-independence, even in today's time when India is emerging to become a Viksit Bharat. In our balance sheet, we have 14% of the loans which are government-sponsored schemes. You will not find this in any of the NBFCs or a private sector bank. Now, these 14% loans are given, a 10,000 rupee loan given to a street vendor. You would be surprised to know in the last 2 years, 2020 October, PM Swanidhi scheme was launched. There are 65 lakh beneficiaries, 6.5 million ladies and gentlemen who have benefited from this scheme. You show me a country which has brought in this kind of scheme. It is the Honorable Prime Minister's vision that this was. Now there is another scheme which has been launched, which is PM Vishwakarma, which is for the craftsmen, the artisans. इनके उत्थान के लिए आपको ऐसा क्यों लगता है ये जो हमारा BPL धीरे धीरे कैसे गिर रहा है? ऐसे ही गिर रहा है. जनधन का जो एक इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन लाया इस गवर्नमेंट ने, आप देखिए today 50% of your population is actually banking. They may be having a Jandan account with minimal balance, but they are in the banking, formal banking sector.
So, what I'm trying to say is that while we are saddled with, a social cause, there is a social agenda which every public sector bank drives, whether it is PNB or BOB. 14% of the balance sheet of the book is actually a government-sponsored scheme where the NPAs are predominantly high, because a street vendor को आप finance करेंगे, you just base your finance on the KYC, जिनका आप stability तक check नहीं कर सकते, and it's a mandate by the government, you cannot reject these loans. Okay? There is no sign of rejection unless he is discovered a fraud. तो ऐसे लोन्स जब आप करेंगे, आपके एनपीए जाहिर सी बात है बढ़ेंगी. अब जब एनपीए बढ़ती है 14% आपके बैलेंस शीट में, अगर आपका एनपीए इज नॉर्थ ऑफ 15%, जाहिर सी बात है इट विल हैव अ वेटेज और इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल एनपीएस. Now, the moment I go to the non-government schemes, which is 86% of my book or 85% of my book, there my NPAs are pretty comfortable. And it is all because of people like you who have contributed in this. Today, unfortunately, we do not have these street vendors sitting because they are not invited here. But they are also MSMEs. And we can't ignore them. Today, a Mudra loan beneficiary is also an MSME. We can't ignore them. तभी ये 6.3 करोड़ के जो MSMEs भारत में, उसमें 99% ऐसे हैं जिनका who fall under the micro segment. They are not in the small and medium. All of you would be between the small and medium sector borrowers, because we invite people in this ऐसे conclave में ऐसे लोगों को ही बुलाते हैं. But I have addressed people who are in the micro segment. The ministers, the government, they address them. You can see a sense of euphoria amongst these micro segments, how this government has changed their lives. Now, coming back to the points which I want to make very specific on to MSME, and this is obviously related to my bank. See, Bank of Baroda today, as Salunke Saab has said, under the aegis of Dr. Khandelwal, who was a stalwart in the banking industry, we formed these SME lifts. Today, you'll be happy to know that we have 65 SME loan factories. We have 40 SME cells, which is 104 SME cells, which only processes MSME loans. There are 335 SME specialized branches launched across the country, जो केवल MSME loans करते हैं. This is an initiative which I presented to the board, and that's formally they also announced to the government that in fact, the private sector banks, they have formed this long back. Today, an HDFC Bank, Axis Bank, Kotak Bank, all the leading names in the private sector bank, including SBI, they have got 10,000, collectively 10,000 relationship managers at the doorstep of the customer. 10,000 relationship managers काम करते हैं हिंदुस्तान के अंदर में. We felt that today a borrower, the point of sale is not the bank or the bank's brick and mortar office, it is actually the customer's place. Though late we realized this, that we must be present at the customer's place. And therefore, we have set up this whole structure of 335 MSME specialized branches, wherein we have a concept of hunter and farmer. And who's a hunter, as the name suggests, is someone who acquires fresh business, and a farmer is someone who harvests that business. Well, he nurtures that relationship and, stays with the customer. Typically, NTB and ETB, new to bank, existing to bank. हमने ये देखा कि हर private public sector bank, and Mr. Balaji will also agree that loads of customers, हमारे बहुत सारे borrowers जो हैं वो shift हो जाते हैं private sector bank में. ऐसा क्यों होता है? Formation stay में, formative years में जब उसको स्थापना करनी होती है, जब वो greenfield होता है, तब वो हमारे पास आते हैं, हम उनको लोन देते हैं, और जैसे वो mature करता है, वो बिल्कुल कोयल और कौवे वाली कहानी है. कोयल का बच्चा कौवा देखता है, जैसे बड़ा होता है कोयल लेके उड़ जाती है उसको. Now we felt, and this was a strong resentment shown by the government of India, that why there is a mass exodus of the good borrowers who are moving from the public sector bank to the private sector bank. Because now, unlike in the past, where government used to infuse funds, capital, now government is very clear, हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप अपना पैसा खुद बनाइए. And you'll be happy to know that with your support, today collectively all the public sector banks have posted a more than 1 trillion profit in the last financial year. First time in the history of the public sector banks where people used to say, हम तो write off के लिए जाने जाते थे. The banks would write off, loan खत्म कर दो, ये पैसा लेके चला गया वो. Every
bank. Every public sector bank has now learned in a better manner through the better past that, enough with the Nirav Modis and enough with the Vijay Mallya's. So everyone has reduced the corporate borrowing. We are only lending to corporates who are superlative. Like we have one here today, JSW. We lend only to the superlative corporates. Our entire focus of the government and the banks is now on the MSMEs and the agriculture. These are the two sectors where all the public sector banks are now focused, and because they are the backbone of your economy. अगर ये जो आपके दो सेक्टर्स अगर सुधर जाएं, आज क्रेडिट गैप देखिए आप कितना बड़ा है एमएसएमई में. आपका देश 30%, आपका hardly 29% is your contribution to the GDP. Where in a developed nation like Germany, you come from Germany, it is as high as 70%. MSMEs contribute to 70% of their GDP. There is a huge credit gap which can be only filled by the MSMEs. And of course, since we are also an agrarian economy, it is very important that we also look in the interest of the farmers. तो हमारे बैंक की तरफ से, see, we have a 1.3 trillion book size in MSME. हमारा 1.3 लाख करोड़ का book है as on September. We want to grow this twofold. हम इसको 2.5 लाख करोड़ ले जाना चाहते हैं in the next 2 years. That is our vision. And I know that at the rate at which the industry is growing, and touch wood, we do not expect any other calamity like what happened in the COVID. हम सबको पता है कोविड में कितनी तकलीफ हुई है. मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, और ये बयान ध्यान में आपके लाना चाहता हूँ कि it is this COVID which has discovered lot of new things. आज ये जो हम टीम्स मीटिंग करते हैं, ये सब कोविड की देन है. बट इस कोविड के जरिए आपको पता है ये एमएसएमई का रिवाइवल हुआ है. It is only and only because of the efforts of the government and the public sector banks. हम लाख बुरा कह दें किसी को, आपको विश्वास नहीं होगा. गवर्नमेंट से क्लियर इंस्ट्रक्शन था सालों के साथ दैट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो फाइनेंस हुआ, मोरेटोरियम जो देना हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग जो हुआ, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग विदाउट लेबलिंग इट एज एन एनपीए, 100% was a successful story in all the public sector banks. आज आप बताइए अगर ये तीन हथियार, ये तीन टूल्स आपके पास नहीं होते हैं, could anyone, any of the, especially the micro and small, I'm leaving the medium apart, which are very small in number, anyone would have them survived? 50% would have just collapsed. हर बैंक ने आगे बढ़ के दिया. सब पे एनपीए पड़ा हुआ है. We all are suffering on the NPAs, but we never crib on that because we know we were a part of the nation building, we were a part of the resurrection. That is the beauty, ladies and gentlemen, of the public sector bank. We are slow, but we are not dead. We are always with you. So मेरी यह दरख्वास्त है आप सबसे, जैसे बालाजी साहब ने बताया, आप अपने अंदरूनी जो फाइनेंशियल पार्ट है, जो जिसको कहते हैं अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल लिटरेसी आप बढ़ाएं. मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है, डू नॉट लीव अ पब्लिक सेक्टर बैंक. आपके जो कंसोर्टियम बैंकर्स हैं, 3-4 बैंकिंग करते हैं, उसमें एक पब्लिक सेक्टर बैंक अवश्य रखें. खुदा न खास्ता दोबारा कोई कोविड आया, दोबारा कोई परेशानी हुई, इट विल बी दिस बैंक विच विल स्टैंड बाय यू rather than the fair weather friends which will simply fly. I just want to rest my case here. Thank you, ladies and gentlemen, for a patient hearing. I would like to take any questions if I have some time. That's all from my side. Thank you very much, भट्टाचार्य जी. आपने तो ऐसा एक मेंटोरिंग स्पीच दिया है कि ये बैंकर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर बोल रहा था, क्योंकि आपके जो शब्द थे, जो पेन पॉइंट आपने जो जाहिर किए, रियली दिस इज अ रिलेटेड टू आवर एंटरप्रेन्योर्स. एक इन्होंने थ्योरेटिकली बताया, आपने प्रैक्टिकली बताया. लेट्स गिव अ बिग हैंड टू बोथ द बैंकर्स. एक हमारे एंटरप्रेन्योर ने उनके पेन बताए, आपने प्रैक्टिकल बताया, आपने प्रोसीजरल वे हाउ वी कैन सपोर्ट. एनी क्वेश्चंस पर्टिकुलरली फॉर द बैंकिंग सर्विसेज और एनी स्पेसिफिक सजेशन? Yes, please. Yes. गुड आफ्टरनून सर. मैं पंजाब नेशनल बैंक से मेरा खुद का अकाउंट है. पहला मैं बैड पॉइंट बताऊंगा कि आपके मैनेजर एक रिटायर होने वाले थे, उन्होंने रिटायर होने तक मेरा फाइल वैसे ही रखा था. ओके. बट नाउ पिंपले सौदागर में मेरा अकाउंट है. वहाँ के जो प्रणय कुमार सर है,
उन्होंने मुझे 25 lakhs का CCB दिया. हाँ हाँ. And now he has taken all responsibility that आपका कंपनी कैसा बढ़ेगा. And he is very positive. उनके पिंपले सौदागर ब्रांच को I know. बेस्ट अवार्ड भी मिला है. हाँ हाँ मिला है. बट दूसरा चीज़ क्या है कि आप जो होम लोन्स है, कार लोन्स है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि उसमें से आपको मतलब इजीली ये मिलता है. यस यू आर राइट. आप बालाजी आप बोलिए. लेकिन हमको MSME का, because I have been personally across the country, I have been in MSME for the last 20 years, जो मैंने बोला था. ठीक है, रिटेल लेंडिंग भी हम करते हैं, लेकिन MSME में भी जोर देते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप आपका प्रपोजल लाइए, फाइल लाइए, वी विल हैंडल इट वेरी क्विकली, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. एंड MSME में बिकॉज वी हैड बीन इनटू दैट MSME, हम जानते हैं उनका पेन कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है. वी अंडरस्टैंड दैट. आप लाइएगा फाइल, हम करते सर. रहते हैं. MSME का लोन कहाँ से, मतलब डायरेक्ट ब्रांच से लेना है क्या पुणे जाने के? सी, आपको यहाँ पर विद इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, विद इन पुणे सिटी वी गॉट 60+ ब्रांचेस. कोई भी ब्रांच में आप जा सकते हो, जो ब्रांच आपका नज़दीक है वहाँ पर. दैट ब्रांचेस आर नाउ एक्टिंग एज अ रेसिपिएंट ऑफ योर फाइल्स, डाटा, रिकॉर्ड्स, बस इतना ही. सारा उसका प्रोसेसिंग, लोन डॉक्यूमेंटेशन, मॉर्गेज, एवरीथिंग मेरे ऑफिस में होता है. एंड आई सिट इन FC रोड, रूपाली होटल के ठीक सामने, वैशाली होटल के ठीक सामने मेरा ऑफिस है. आई सिट इन. यस, आई हैव बीन देयर फॉर जो दिवाली के टाइम था. डोंट डिस्कस जनरल. डोंट डिस्कस जनरल. ठीक. ऐसा है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत लोगों को ये पता नहीं है इसका प्रोसीजर. इनके वेबसाइट पे परफेक्टली सब कुछ डिस्प्ले है. एक बार एक गवर्नमेंट ऑफिसर को हम बुलाए थे और एक बंदे का ऐसा सिस्टम था कि उनके कुछ इशू थे. उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में किसी को लिखा नहीं, ना किसी ऑफिसर को जाके लोअर लेवल के ऑफिसर के पास कंप्लेंट दिया, बट वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया था उसको कंप्लेंट करे. उन्होंने पूछा आप कभी लिखा है, आपने लेटर लिखा है मुझे, या कभी आपने जाके बोलते नहीं लिखा. फिर अभी क्यों बोलते हो? तो आज बैंक में कोई भी ब्रांच में जाइए, कौन सा ब्रांच मैनेजर कहेगा कि यहाँ फाइल मत लाइए आप? किसी हिम्मत है ब्रांच मैनेजर के कहने की? बिकॉज यू हैव अ वाइबल प्रपोजल. आप देखिए, आपको हक है कि कोई भी ब्रांच में जाके मेरा ये प्रपोजल है, मुझे अप्लाई करना है. ब्रांच मैनेजर शुड से कि भाई आप नहीं एलिजिबल है, देन यू कैन गो टू द बालाजी साहब, देन यू कैन गो टू द मिस्टर भट्टाचार्य. तो आप पहले समझ लीजिए प्रोसीजर, उसके बाद आप छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे रेज किएगा. एकदम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो प्रोसीजरल लेवल पे जहाँ पर आपको दिक्कत है वो बताइए. मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पंजाब नेशनल बैंक के साथ. इट इज द ओनली बैंक जहाँ हर महीने बैंक मैनेजर फिजिकली स्टॉक देखता है. एंड आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस. मेरा एक स्टेट बोर्ड का ऑर्डर था, कैंसिल हो गया डिफेंस का. इट वाज पंजाब नेशनल बैंक हु गेव मी वर्किंग. गुड, थैंक यू. गिव अ गुड. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कुछ है? No news is good news. Bhattacharya sir, Balaji sir, I really appreciate the way you explained about the bankers. The nationalized banks are really performing exceptionally well because of the support of the government. और आप जो MSME के लिए जो भी कर रहे हो, आपके जो आपने स्पीच दिया उसमें से वो दर्द या वो तड़प, वो लगन हमको महसूस हुई यहाँ पर. जैसे बालाजी सर ने कहा कि 30% या 35% तक हम लोग कोलैटरल की ये करते हैं इन द नेशन बिल्डिंग. तो हमको देखना चाहिए कि MSME के लिए, SME के लिए या माइक्रो के लिए मैक्सिमम जितना हम लोग कर सकते हैं. जैसे आप अभी यहाँ पर SME या MSME के फोरम में आए हो, आप डेफिनेटली गवर्नमेंट के फोरम में भी जाते होंगे, मिनिस्ट्री में जाते होंगे, बीइंग ए वेरी सीनियर पर्सन. तो आपको उनको बोलना चाहिए कि मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं MSME या SME के लिए. जैसे आपने अभी BG का परसेंटेज बताया कि आप 1.2 से 1.4% देते हो. बड़े कॉरपोरेट के लिए यही बैंक्स, आपके बैंक्स या प्राइवेट बैंक 0.5 to 0.75 तक देते हैं, बिकॉज नेचुरली उनका वॉल्यूम बड़ा होता है. So in terms of absolute amount, you are getting more, and you should definitely do that. But the similar kind of thing you should do for the MSME also, because they should also get the same kind of percent, though they are small.
वहाँ पे प्रॉफिट का या इसका ये नहीं सोचना चाहिए बैंक ने. सर सिमिलर काइंड ऑफ एलसी का आप 8% कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, इट इज़ ओके, बट बीजी के लिए आपने वो करना चाहिए, या कोलैटरल के लिए आपने कुछ ये सोचना चाहिए. दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, नाइस क्वेश्चन. इसका जरा मैं जवाब देना चाहूँगा. पॉइंट इज़ वेल टेकन कि सर आप सिर्फ एसएमई चैम्बर में आते हो या गवर्नमेंट में भी जाते हो. हम गवर्नमेंट में भी जाते हैं. हमारा जो भी रिक्वेस्ट है, रेफरेंसेस है, गवर्नमेंट तक पहुंचता है. मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बोलना चाहूँगा. CGTMSE का कवरेज जो था अर्लियर, अभी 2 साल के पहले दैट कवरेज यूज्ड टू बी 2 crore ओनली. अभी लास्ट ईयर में सीधा 2 crore से हम खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. हम चाह रहे थे 2 से 3 कर दो. बिकॉज honestly speaking, एज ए लेंडर वी हैव टू प्रोटेक्ट पब्लिक मनी आल्सो ना. आपको मैं जो लोन दे रहा हूँ वो इनका पैसा है, इनका डिपॉजिट मेरे पास है, तभी तो मैं आपको लोन दे पा रहा हूँ. आपके पास जो लोन दिया फेल हो जाएगा, मैं इनको कैसा डिपॉजिट वापस कर पाऊंगा. बट स्टिल गवर्नमेंट ने इतना वो एफर्ट लिया. कोरोना के बाद में साहब ने एक्सप्लेन किया, कोरोना में जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन्स जितना मतलब इफेक्टिव हुए थे पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर को, इट वाज अ टोटल ट्रूथ. 100% आई एम विद देम. बुला बुला के हम दे रहे थे लोन, लेके जाओ, पूछते ही नहीं थे. सेकेंडली, आप जो पॉइंट है, we raised to the government about the without collateral funding requirement for MSMEs and government had accepted loans up to 5 crore without collateral. हम तो लेफ्ट राइट सेंटर कर रहे हैं अभी. तो धीरे धीरे हम जो प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है उस चीज़ को, हीड कर रही है. धीरे धीरे चेंजेस तो आ ही रहा है. दैट इज व्हाट द पॉइंट आई वांट टू प्लेस इट हियर. थैंक यू. मैंने 10 करोड़ तक मांग की थी और 5 करोड़ पे. ठीक है, सब लोग मांगते हैं. जैसा मतलब कॉमर्स पे ये भी जाता है, आपका प्लेटफॉर्म भी जाता है, बैंकर को भी पूछा जाता है, भाई यहाँ से ये रिक्वेस्ट आया, क्या करना है. वी ऑल्सो एक्सेप्ट कि नहीं 2 करोड़ से 3 करोड़ तक कर दो, बट 5 करोड़ तक उन्होंने दिया. इमर्जिंग कंपनीज जो है, मिड कॉर्पोरेट, मीडियम साइज, उसके लिए मैं 35 करोड़ की मांग किया हूँ. Because One they should point, also. sir, just wanted to add over here. Under the guidance of Mr. Salunke, what we have done, we have pursued with the CGT SME, जो आपका कवरेज 75% मिलता है ना, so 25% left over है. So we have pursued with the government and CGT SME. State government is signing a MOU with CGT SME for the remaining not 25%, but उसमें से कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट कवर देने वाली है. सो दे आर गिविंग अ स्पेशल फंड. अगर वो मिलता है तो बैंकिंग के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा. एंड यू विल गेट द CGT SME लोन्स एंड वेरी फास्ट एंड इमीडिएटली. वो कवर बहुत अच्छा हो जाएगा सर. ये मंथ में मेरे ख्याल से वो MOU साइन हो जाएगा. See, Section 8 company is also business company. They can apply according to the norms. Except political party. Under Section 8 भी some political NGO आते हैं, उसको छोड़ के सब बन जाए. अगर बिजनेस एंटिटी है तो बिजनेस एंटिटी है, आपके बायलॉज में वो क्लॉज होना चाहिए. दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द MCA. उसके बाद वो हो सकता है. So, I think so. last- We are. we can take one, maybe 2 gentlemen standing like that. yes, sir, go ahead. So सर आपने जो बोला फाइनेंशियल अवेयरनेस, बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, वी आर इंजीनियर्स, वी डोंट अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट्स. तो बैंक ने थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने चाहिए कि कैसे बैलेंस शीट रीड करना है, कौन सा रेशियो कैसा मैनेज करना है. सो देन वी विल बी इन अ बेटर प्लेस टू कम विद द बेटर बैलेंस शीट. सर अपने कंट्री में आप देखते हैं सीए के बाद यहाँ भी बैठे होंगे कुछ CAs. आप तो नहीं, सी जोक्स अपार्ट, आई थिंक यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप मान लीजिए कोई डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, तो आपके पास टाइम कहाँ है. तो आइडियली पीपल, सो सिंस यू आर अ डॉक्टर टर्न कॉर्पोरेट और यू आर डॉनिंग बोथ द हैट्स, यू शुड आइडियली अपॉइंट अ CFO. So I would always recommend आप एक छोटे स्तर पे, not a very flamboyant CEO, but you need, आप वर्चुअल CFO या इस तरह का आप ज़रूर रखिए एक प्रोफेशनल जो कि इसको समझ में, क्योंकि आपका काम जो है वो फोर्सेप और इस पे है, तो यू फोकस ऑन योर सर्जरी एंड लेट द फाइनेंशियल सर्जरी बी डन बाय अ प्रोफेशनल. सो माय पॉइंट हियर वाज समबडी जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है CFO को, देयरफॉर ही शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट. एंड लेट मी आल्सो पॉइंट आउट बिफोर आई हैंड इट ओवर टू मिस्टर बालाजी, वी रन फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स. There are FLC, there are financial literacy centers. We have good 80 odd in the country.
वो रूरल स्पेस में होता है, सेमी अर्बन स्पेस में होता है, हो सकता है वो यू कैन चेक आउट विद माई टीम, बट जोशी जी यू कैन प्लीज गाइड देम. वी हैव फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, आप अपनी टीम को वहाँ भेज सकते हैं, वो सीख सकते हैं. एंड देन मेरा एक छोटा सा गुड पॉइंट हियर रईस सर, मेरा बैलेंस शीट के बारे में मेरे को मतलब और क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए. मैं बहुत आई ट्राई टू पुट थिंग्स इन अ वेरी सिंपलर मैनर. मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ. मैं सिंपल क्या बोलता हूँ, यहाँ से एक आम MSME एंटरप्रेन्योर जो नॉर्मल फैक्ट्री चलाता है, नॉर्मल बिजनेस करता है, नॉर्मल बैलेंस शीट है, उसको मैं पूछता हूँ, आप डॉक्टर तो नहीं हो, लेकिन आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है वो तो आप ख्याल रखते हो ना उस चीज़ का. आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल क्या है, ब्लड शुगर लेवल क्या है, मेरा जो एनुअल मेडिकल चेकअप में मेरा नंबर्स क्या है, मेरे को क्या मेडिसिन लेना है, एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखते हो ना. पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2, आपका बच्चा 12th पास करके कॉलेज में जाना चाह रहा है, तो आप थोड़ा ये देखते हो ना, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर में इलेक्ट्रिकल अच्छा है, कॉमर्स वो क्या अच्छा है, वो सब चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो ना. मे बी यू आर नॉट अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू आर समथिंग एल्स, बट स्टिल आप थोड़ा बच्चे को जब कॉलेज में जाते हो ले जा करके थोड़ा देखते हो कि क्या है फैकल्टी है, क्या उसका परफॉर्मेंस लेवल है, क्या पढ़ाता है, उतना आप ध्यान रखो. बस इतना ही मैं बोलता हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि यू रिप्लेस ये तो हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. बट एटलीस्ट जो मेरा कुंडली है उस पर कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, इतना मेरे को तो जानकारी होना चाहिए. मतलब एस्ट्रोलॉजर बताएगा फ्यूचर क्या है, भविष्य वो तो बोलेगा, लेकिन एटलीस्ट मेरे को तो जानकारी होना चाहिए. पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2, एज भट्टाचार्य जी सेड, यहाँ पर पुणे में हम लास्ट 3 years में MSME मीट जो है 6 बार कर चुके हैं. वी ऑल्सो पब्लिश इन दी पेपर्स, वी ऑल्सो सेंड थ्रू दी वेबसाइट्स, एवरीथिंग. वहाँ पर आपको एंट्री फ्री है. ऐसे ही होटल्स में हम करते हैं. आपको मतलब इट नॉट नेसेसरीली यू इमीडिएटली कम टू पंजाब नेशनल बैंक, आप ग्राहक होंगे तब आप आ पाएंगे, ऐसा भी नहीं है. आप आकर के यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हो. हमारे पास में टीम्स है जो गाइड भी करती है आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. बिकॉज आपका बैलेंस शीट में जो कमी पेशी आपको समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद में जो है बात करना इजी हो जाएगा. बिकॉज बैंकर स्पीक्स अ फाइनेंशियल लैंग्वेज, वो बैलेंस शीट को लेके बात करता है. आप बेसिकली आपका टॉप लाइन, आपका ऑर्डर्स कितना है, आपको कितना फंड्स का भी जरूरत है, आपका वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है, वो एक एंगल है. उसको आप मैच कर लो तो फंडिंग बड़ा इजी हो जाएगा. ये मेरा सिंपल सबमिशन है. I will tell you, I probably am able to understand your problem. So, we are very scared about, balance sheet, but banks see couple of points only. So, don't be scared. Like, if you know your creditor day, debtor day, PAT, and inventory, so that's all, right? So, don't be scared with all that balance sheet. They see only 3-4 figures, like debtor day, creditor day, PAT, and these people can guide. But just these 4-5 numbers you have to know. That's all. Which are important, right? I think so. We should. आप लोगों की शादियां तो हो गई होगी या लड़की देखने की कोशिश करते होंगे ना, तो हम क्या देखते हैं, जात पात और उसका क्या बोलते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड. बस बैंक भी देखता है. एक आजकल न्यू एक एडवर्टाइजमेंट आई है पिरामल ग्रुप की या कौन से कंपनी, या मैं भूल गया, फाइनेंस. हम नीयत देखते हैं, हम पेपर नहीं देखते. तो बैंकर के पास, आपके बीवी के पास, आपके मदर के पास, आपके CA के पास और वकील के पास जब जाते हो ना, सच बोलो, झूठ मत बोलो, और सच बताओ कि मुझे पैसा चाहिए, और बैंकर समझता है नीयत अच्छी है, दे देना है. चलो, लेट्स क्लोज दिस सेशन नाउ. थैंक यू वेरी मच. महेश कुमार, गो अहेड. Thank you very much for the August panelists, and give the very big round of applause. It's a very informative session. I think, sir, we'll take it offline, please, because we have 45 minutes. We are delay. हाँ, बोलिए. MSME Act 2006 जो है, जो 45 days में पेमेंट होना चाहिए, लेकिन वो पेमेंट होता नहीं है. और जनरली यूटिलिटी प्राइवेट तो करते हैं, क्वेश्चन तो रेज करना था. मैं बोल रहा हूँ, दोनों माइक दे दीजिए आपने. उनके अगेंस्ट में MSME में जाता नहीं. MSME में जाने उसके लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म मैंने खुद एफर्ट्स करके लाया है. नेशनल बैंक के साथ आप भेजिए, कंसोर्टियम में रहिए, लेकिन आप एक नेशनलाइज बैंक करिए, ऐसे भेजिए. सर, ये अगर बैंकर 45 डेज आपके पास में सारी चीजें 43 भी ना, 43 भी ना. उन्होंने भी आपके पास में फैसिलिटी दी है, उनके आपके पास में स्टॉक स्टेटमेंट है. 45 डेज में अगर पेमेंट नहीं आता है तो डायरेक्टली आपका अगर मेल उनको जाता है, दैट विल बी ग्रेट थिंग. किसका मेल जाना चाहिए, किसका मेल जाना चाहिए? बैंक का मेल जाना चाहिए.
बैंकर्स का मैं जानना चाहिए दिस बिकम्स द पॉलिसी दैट ट्रू सपोर्ट टू द एमएसएमई सर एक सर्कुलर आया हुआ है मेरे ख्याल से लास्ट वीक बैक 43B का एक इनकम टैक्स का है, वो आप ऑनलाइन जाके, एक मिनट, ऑनलाइन जाके आप देख लीजिए 43B क्या है क्लॉज, उससे आपको 90% आपका क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियरिटी आ जाएगी आपको। There are so many laws for the MSME. There is a lot of support from the government. But because of the relation, the MSME independent... Why don't you give me your presentation by email so that we can forward to the concerned authority? No, simple नहीं, request simple ऐसा request नहीं सर होता है। आप इसमें भेज आप दीजिए ना। RBI गवर्नर You को just रिक्वेस्ट send it नहीं to us in करना writing. चाहिए, उसको देना चाहिए। मैं 5 तारीख को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी की मीटिंग है, आई कैन प्रेजेंट दैट। वी नीड अ ऑफिशियल। देखिए जितने भी एंटरप्रेन्योर यहाँ बैठे हैं, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो पूना के एंटरप्रेन्योर्स बहुत क्लेवर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, वैल्यू एडिशन देते हैं। वैसे कोयम्बतूर के भी एंटरप्रेन्योर्स मैंने देखे हैं, मुंबई के एंटरप्रेन्योर ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी आए हुए। तो कहने की बात यह है कि आई एम नॉट जस्ट डिवाइडिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है। आप जो प्रॉब्लम फेस करते हो, आज खाली बात हमारी यहाँ कॉन्फ्रेंस में होती है, कल भूल जाओगे। जिसका मुझे ईमेल आएगा कि ये मेरे प्रॉब्लम है, ये मेरे सजेशन है, उन्हीं को मैं नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। चलेगा? बिकॉज सी हम खाली फोटो निकालने के लिए यहाँ बैठे नहीं है। आज 30 साल से ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं इसके लिए नहीं, कितने मानो SME स्टॉक एक्सचेंज मैंने, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म लाया है, MSME एक्ट का जो चेंज करने का काम मैंने कराया है। तो कहने की बात है, आपकी सुविधा के लिए हम कुछ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा लेना ज़रूरी है। अभी भट्टाचार्य साहब ने, बालाजी साहब ने कहा, लेकिन आपका अप्रोच भी ऐसा होना चाहिए। इन्होंने 90% काम तो आपके हाथ में, 10% तो CA के हाथ में है। सो बेस्ट वे यू शुड फोकस ऑन हाउ टू यूज़। देखिए ड्राइवर के हाथ में जब गाड़ी होती है तो उसको दिशा, उसको डेस्टिनेशन पता होता है, तो लेकिन पीछे बैठने वालों को पता है कि हम बराबर सेफ जाएंगे कि नहीं। वैसे बैंकर्स होता है, ये सेफ बिजनेस करेगा कि नहीं, सिक्योर्ड बिजनेस करेगा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो अहेड नाउ, वी आर लेट फॉर 1 hour एटलीस्ट। थैंक यू। So thank you very much all the speakers and sponsors for this event. Give a round of applause to them again. And now